Look this. I have one presentation file of this unit, that is database management system. This presentation file will work in both the class 10th as well as class 12th, because this is the basic concept about the database. So look this database. In that we will read two topics. One is data and what is information. So what is data and what is information? Data, you know very well, data is a raw facts and figure, or simply you can say that unorganized collection is known as data. Unorganized collection is known as data, and after processing, whatever we have to get, that is known as information. Clear? Look this. A database is an organized collection of data. You can visualize it as a container of information. Means database is nothing but it is a collection of data in an organized manner. And in other words, you can say that it is a container. Means database is a container which contains all kinds of information. Means all the related kinds of information. जो same similar type की information होगी वो एक side रखेंगे और another kind की information दूसरी side रखेंगे. ठीक है? That's why it is called organized. Clear? So database is an organized collection of data. You can visualize it as a container of information. Next, what is data? So data is a raw, unorganized facts that need to be processed. Means data is a raw facts and figure जिसका अभी use नहीं हुआ. That's like whenever you make your building, you want some raw material. ठीक है, जिनका अभी यूज नहीं हुआ है. तो सिमिलरली रॉ फैक्ट्स एंड फिगर्स जो होंगे दैट इज कॉल्ड डाटा. अनऑर्गेनाइज जो ऑर्गेनाइज ना हो, ठीक है, दैट नीड टू बी प्रोसेस्ड इज नोन एज डाटा. देन नेक्स्ट, व्हेन डाटा इज प्रोसेस्ड, organized, structured, or presented in a given context so as to make it useful is called information. So information is nothing but it is a processed data, organized data. Means after processing, whatever we have to get, that is known as information. Look this. This one is an example. Your name, your age, height, weight, etc. are some data related to you. Like a picture, image, file, PDF, etc. can also be considered as a data. For example, 165 centimeter, Lajpat Nagar, Ram Kumar, 16 years, class 10, all are data. They all are data. Data on its own has no meaning. जिसका कोई मतलब नहीं होता, that is known as data. It is only after processing this data that it becomes information. It means after processing, whatever result we will get, that result is known as information. For example, in the above context, Ram Kumar of 16 year age, having height of 165 centimeter, lives in Lajpat Nagar is information. तो मीन्स ये बता रहा है कि राम कुमार जिसकी एज 16 ईयर है, उसकी हाइट 165 सेंटीमीटर है और वो लाजपत नगर में रहता है. तो दिस इज द कंप्लीट इंफॉर्मेशन. ठीक है. सो आफ्टर प्रोसेसिंग, आफ्टर प्रोसेस्ड डाटा, द रिजल्ट वी गेट, दिस रिजल्ट इज नोन एज इंफॉर्मेशन. इज इट क्लियर? Clear or not? Yes or no reply? Yes, Yes, sir. sir. Very good. Now, database. The database concept has evolved since the 1960s to ease increasing difficulties in designing, building, and maintaining
complex information system. So this is the definition of database, means why we use database or what when it comes. तो ये बता रहा है कि कुछ प्रॉब्लम्स आती थी हमें डिजाइन करने में, बिल्ड करने में, जब हम कॉम्प्लेक्स इंफॉर्मेशन बनाते थे, कॉम्प्लेक्स इंफॉर्मेशन को स्टोर करना है हमें, तो उस टाइम पे कुछ प्रॉब्लम्स आती थी, तो उसके लिए एक कॉन्सेप्ट डेवलप हुआ जिसको हमने क्या बोल दिया, डाटाबेस. नेक्स्ट, database management system, or you can say database management software. Clear? Definition of database is also this one, huh? ये भी database की definition है. A database is an organized collection of data. You can visualize it as a container of information. Both are correct. Either you have to write and this one. कुछ भी लिख दो सही होगा. ठीक है? Then DBMS. A system which manages database is known as DBMS. According to the full form, a system which manages database is known as DBMS, means database management system. Look this first point. A database management system is a software package with computer programs that controls the creation, maintenance and use of a database. Means it is a kind of software package. Means DBMS is a kind of software package which control all the things. Means how we create a database, how we maintain it. Maintain means अपडेशन कह सकते हो, डिलीशन कह सकते हो. ठीक है, तो ये सब कैसे करेंगे, मेंटेनेंस. एंड हाउ वी यूज डाटाबेस, तो कैसे क्रिएट करेंगे, कैसे मेंटेन करेंगे, कैसे यूज करेंगे, ये सब ये बताता है. इसका काम ये कंट्रोल करने का होता है. मीन्स इस तरह का सॉफ्टवेयर है ये. अ डेटाबेस इज एन इंटीग्रेटेड कलेक्शन ऑफ डेटा रिकॉर्ड्स, फाइल्स एंड अदर ऑब्जेक्ट्स. ठीक है, तो मीन्स डेटाबेस नथिंग बट इट इज अ इंटीग्रेटेड कलेक्शन. इंटीग्रेटेड मीन्स है जुड़ा हुआ, अटैच्ड. ठीक है, अटैच्ड कलेक्शन. कलेक्शन किसका होना चाहिए, डेटा रिकॉर्ड्स का होना चाहिए, फाइल्स का होना चाहिए और अदर ऑब्जेक्ट. अदर ऑब्जेक्ट मे बी पीडीएफ फाइल्स, अदर ऑब्जेक्ट मे बी इमेज और समथिंग एल्स, कुछ भी हो सकता है यहाँ पर. ठीक है, देन अ DBMS allows different user application program to concurrently access the same database. Concurrently means simultaneously, एक साथ आप सेम डेटाबेस को एक्सेस कर सकते हो. मतलब कई सारे के एप्लीकेशन प्रोग्राम होंगे जो सेम डेटाबेस को एक टाइम पर एक्सेस कर पाएंगे. ठीक है, वेल नोन DBMS includes Oracle, IBM DB2, Microsoft SQL Server, Microsoft Access, PostgreSQL, MySQL, FoxPro, SQLite. So these are the database software. Here in this class 12, we will use this one software, MySQL. इसको हम यूज करेंगे. Then data categorization. So two kinds of data we have. One is flat file and second one is relational. Flat file data is stored in a single table. Flat file में we use data in or store this data in a single table, usually suitable for less amount of data. Means when we have very less amount of data, that time we have used the concept of flat file. Then relational data model. In the yesterday class, in the previous class, we have seen relational data model. Relational means where we use tables, means one table or more than one table, जिसमें एक से ज़्यादा टेबल को हम मर्ज कर सकते हैं, उनसे डेटा फैच कर सकते हैं. जब हम एक से ज़्यादा टेबल पर काम कर रहे हैं तो कॉन्सेप्ट यूज होगा रिलेशनल का. डेटा इज स्टोर्ड इन मल्टीपल टेबल्स and the tables are linked using a common field. Suppose that we are talking about foreign key. Foreign key is created once we have to set primary key in one table, it act as a foreign key in another table. तो means दोनों में एक फील्ड जो होगा, एक कॉलम जो होगा वो हमारा क्या होगा, कॉमन होगा. ठीक है, तो उससे हम क्या करेंगे, दोनों टेबल को लिंक करेंगे. Then only we can fetch data. तो लिखा है data is stored in multiple tables and the tables are linked using a common field. Relational is a suitable for medium to large amount of data. So flat file is suitable for less amount of data, whereas relational data model is suitable for
large amount of data. Then advantage of database. What are the advantages? First advantage, data entry. Entry means insert. Data entry, update, read and delete. Cost is reduced. Means when we use database software, then the cost of entry, cost of the updation, reading cost, deletion cost is reduced. Then reduce data redundancy. Here redundancy means duplicacy. ठीक है? When we use database software, then anywhere we update data, it will reflect in all the tables which are connected. ठीक है, जो उस database में connected tables होंगी उन सब में उसका डाटा अपडेट होगा. तो means it reduce data redundancy. Next, data sharing is made easy. Data sharing how? Suppose you go to the school office and register yourself, means your data is recorded in a admin's computer, and then this information is shared in all the departments, either they are sports department, cultural department, transport department, library department or any other. Clear? So data sharing is possible or it is easy with the help of DBMS software. Then the end user's productivity is improved. Decision making with data is improved. Improved data access means quickly you can get data. Better data integration. Integration means merge. ठीक है, तो data is integrated here. Next, features of DBMS. First feature is query ability, means through the query we can get data from the database. Backup and replication, this feature is also available. Security feature is also available. Computation means we can calculate with the data, मतलब कुछ ना कुछ हम कंप्यूट कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं डाटा के साथ. ठीक है. नेक्स्ट, database servers. Database servers are dedicated computers that hold the actual database and run only the DBMS and related software. Means ये एक तरह का सर्वर है जो क्या होता है, डाटाबेस को अपने अंदर स्टोर करता है और क्या करता है, रन ओनली द DBMS एंड रिलेटेड सॉफ्टवेयर. दिस काइंड ऑफ कंप्यूटर रन ओनली डेटाबेस सॉफ्टवेयर. ठीक है, सिर्फ DBMS रिलेटेड जो सॉफ्टवेयर होंगे और उससे रिलेटेड जो सॉफ्टवेयर होंगे उन्हीं को रन करेगा, इसके अलावा कुछ नहीं. देन टिपिकली databases available on the database server are accessed through command line or graphics user interface tool refers to as front end. Means some softwares we have to use database where we use commands or we use images or some symbols जिसको बोलेंगे हम ग्राफिक यूजर इंटरफेस टूल्स. ठीक है, तो दैट काइंड ऑफ सॉफ्टवेयर, दैट पार्ट इज नोन एज फ्रंट एंड. सो दिस टाइम दिस इज अ सॉफ्टवेयर. अभी जो मुझे सामने दिख रहा है, हियर आई विल टाइप सम कमांड टू इंसर्ट डाटा और टू फैच द डाटा. ठीक है, डाटा को इंसर्ट करने के लिए, फैच करने के लिए यहाँ पर कुछ कमांड लिखनी पड़ेगी. ठीक है, तो दिस इज नोन एज फ्रंट एंड. इसको हम क्या बोलेंगे, यहाँ पर फ्रंट एंड बोलेंगे. और database server where data is stored, where database is stored, जहाँ पर database हमारा स्टोर होगा. ठीक है, वो क्या होगा, सर्वर पे जाके स्टोर होगा. तो database servers are referred to as backend. ठीक है, और बैकएंड आपको नहीं दिखेगा. फ्रंट एंड जिसपे हम काम करते हैं, बैकएंड प्रोसेस जो हमें दिखती नहीं, बैकग्राउंड की जो कोडिंग होगी. नेक्स्ट, RDBMS. RDBMS is known as Relational Database Management System. Relational means when we work with multiple tables.
दैट टाइम वी यूज द कॉन्सेप्ट ऑफ RDBMS. मल्टीपल टेबल्स में जब हम काम करेंगे तो उस टाइम पर RDBMS आएगा. A relational database management system is a database management system that is based on relational model as introduced by E.F. Codd of IBM's St. John's Research Laboratory. Means developed by, introduced by E.F. Codd. RDBMS software, this kind of relational model introduced by E.F. Codd. E.F. Codd ने दिया था हमें, ठीक है. In the relational model of a database, all data is represented in terms of tuples grouped into relation. ठीक है, मीन्स टपल कह सकते हो आप, एट्रीब्यूट्स कह सकते हो. सो एवरीथिंग लाइक ग्रुप्ड इनटू रिलेशन. ग्रुप्ड इनटू रिलेशन मींस कीज आ जाएंगी यहाँ पर, प्राइमरी की, फॉरेन की, तो इसमें हम ये यूज करेंगे. तो हियर इन द रिलेशनल डेटाबेस, रिलेशनल मॉडल ऑफ डेटाबेस, all data is represented in terms of this, और common terms we read in the last class. उसमें हमने पढ़ ली थी common terms क्या क्या होती है इसकी. Then now database concept. A database can have one or many tables. Yes. Next, fields. Fields means columns. Columns that define the value in the rows. It contains only one type of information. Means in a single field we store same type of information. Means one type of information, that is called field. Clear? In this figure, company, region, product, month, sales are the different field name. So picture is not given here, but these company, region, these are the name of the columns. So columns, if company is a name of the field, so here we write only name of the company. Region, so region लिखना पड़ेगा, ठीक है. साउथ, ईस्ट, नॉर्थ, वेस्ट, वट एवर दिस. प्रोडक्ट, फिर देन मंथ, देन सेल्स. सो दीज आर द नेम ऑफ द कॉलम. Then record a row of data that contains value of each field. Means in other words you can say that it is tuple. Tuple means a group of data. ठीक है, एक रो में जो रिकॉर्ड आ रहा है that is known as record. So a row of data that contains value of each field. A collection of fields data makes one record. A record display all the information about a single record like ABC, EMEA, product 3, Jan 1000 are showing the complete record. So means this is the row, means this is the value of all the fields, ठीक है, in a single row. तो इसका मीन्स ये क्या हो जाएगा, आपका रिकॉर्ड हो जाएगा. और इन अदर टर्म्स यू कैन से इट इज अ टपल. ये टपल भी हो जाएगा. नेक्स्ट, व्हाट आर कीज. कीज क्या होती हैं. अ डीबीएमएस की इज एन एट्रीब्यूट or set of an attributes which helps you to identify a row in a relation. Means a record in a relation. Relation means table में आपको एक record identify करना है, तो उसके लिए you require key, concept of key. तो key may be a single column or set of columns, or a group of columns. So attributes or set of attributes. They allow you to find relation between two tables. Key help you uniquely identify a row in a table by combination of one or more columns in that table. Next, properties of primary key. जो primary key है उस क्या होता है ये. Primary key is a column or group of column in a table that uniquely identify every row in that table. Means primary key is used to uniquely identify a particular record from the table. Primary key can't be duplicate, meaning the same value can't appear more than once in the table. Means in one table we put only one primary key. एक टेबल में सिर्फ एक ही प्राइमरी की होगी, एक से ज्यादा प्राइमरी की नहीं आएगी, ठीक है. एंड वी कांट
put या give duplicate value in that particular column where we insert primary key. जिसमें हमने primary key लगाई है उसमें हम duplicate value insert नहीं कर पाएंगे. A table cannot have more than one primary. I already explained this. Next, primary key properties. There can be there can only be one primary key for a table. Yes. Second, primary key consists of one or more columns. That means if this column like this in your table column is like this, first name, last name, marks, these three columns are there, or maybe two students have same first name, so that time what you have to do, you have to take two columns and make it as a primary key. So group of attributes मिलकर भी हमारे primary key बना सकते हैं. तो primary key consists of one or more columns. Primary key enforces the entity integrity of the table. ये सिस्टम को एंटिटी को जोड़ी रखती है. ठीक है. Then all columns defined must be defined as not null. Means हमें सारे कॉलम को क्या डिफाइन करना है? नॉट नल, मीन्स ब्लैंक नहीं छोड़ना है. प्राइमरी की यूनिकली आइडेंटिफाइज अ रो. ठीक है. तो मीन्स थ्रू द प्राइमरी की वी कैन यूनिकली आइडेंटिफाई पर्टिकुलर रिकॉर्ड्स. देन कंपोजिट की. कंपोजिट की और कंपोजिट प्राइमरी की. तो कंपोजिट एज अ नेम सजेस्ट, कंपोजिट इट मीन्स कंपोज. कंपोज हाउ? by the help of more than one columns. ठीक है. तो it is also known as composite primary key. Refers to cases where more than one column is used to specify the primary key of a table. ठीक है. Once more than one column are used to identify particular records, so it acts as a primary key of a table. Clear? Then it may be a candidate key or primary key. Clear? Then columns that make up composite key can be of different data types. ठीक है. जो जो कॉलम्स आप यूज करोगे और दोनों कॉलम के डेटा टाइप क्या होते हैं? डिफरेंट हो सकते हैं. इज इट क्लियर? टिल नाउ इट इज क्लियर. नेक्स्ट, next is alternate key. Alternate key is a column or group of columns in a table that uniquely identify each row in that table. Means it is just like a composite key, maybe a single column or more than one column that is used to uniquely identify particular records in a table. A table can have multiple choice for a primary key, but only one can be set as a primary key. Means एक टेबल में मोर देन वन कॉलम ऐसे होंगे जिनके पास ऐसी कैपेबिलिटी होगी जिससे हम रिकॉर्ड को यूनिकली आइडेंटिफाई कर लें, बट उनमें से कोई एक तो प्राइमरी की बन गया, तो रिमेनिंग कीज जो बच गई, रिमेनिंग कॉलम्स जो हमारे बच गए, दैट इज नोन एज अल्टरनेट की. So all the keys which are not primary key are called alternate key. Clear? A table can have multiple choices for a primary key. Primary key बनने के लिए हमारे पास choices बहुत सारी थी, but only one can be set as a primary key. लेकिन एक ही क्या बन पाई? Primary key बन पाई. All the keys which are not primary key are called alternate key. तो इसका मीन्स जो प्राइमरी की नहीं बन पाई, remaining keys is known as alternate key. Then candidate key. Candidate key is a set of attributes that uniquely identify tuples in a table. Candidate key is the super key with no repeated attributes. The primary key should be selected from the candidate key. Yes, candidates means more than one columns have capability to make a key.
एक से ज्यादा कॉलम ऐसे हैं हमारे टेबल में जो क्या के अंदर कैपेबिलिटी है कि वो कीज बन सकते हैं, मीन्स प्राइमरी की भी बन सकते हैं, ठीक है। सो ऑल द कीज आर नोन एज, ऑल द एट्रीब्यूट्स और सेट ऑफ एट्रीब्यूट्स आर नोन एज कैंडिडेट की, ठीक है, उनको हम कैंडिडेट की बोलेंगे, ठीक है। तो प्राइमरी की इज ऑल्सो सेलेक्ट फ्रॉम द कैंडिडेट की, कैंडिडेट की से ही हम प्राइमरी की सेलेक्ट करेंगे, एंड रिमेनिंग की जो बचेंगी दैट इज नोन एज अल्टरनेट की, उसे अल्टरनेट की बोलेंगे, ठीक है। एवरी टेबल मस्ट हैव एटलीस्ट अ सिंगल कैंडिडेट की, तो हर एक टेबल में कम से कम एक तो कैंडिडेट की होनी चाहिए जिसको हम प्राइमरी की बना सकें, ठीक है। फ्रॉम a table can have multiple candidate keys but only a single primary key, means एक टेबल में एक से ज्यादा तो कैंडिडेट की हो सकती है बट यू सेलेक्ट ओनली वन की एज अ प्राइमरी की इन अ टेबल, लेकिन एक टेबल में एक ही प्राइमरी की होगी, एक से ज्यादा प्राइमरी की पॉसिबल नहीं है। देन प्रॉपर्टीज ऑफ कैंडिडेट की, इट मस्ट कंटेन यूनिक वैल्यू, candidate key must have multiple attributes, must not contain null value, it should contain minimum field to ensure uniqueness or uniquely identify each record in a table. This one line, this one must contain unique values, candidate key may have multiple attributes, must not contain null value, it should contain minimum field to ensure uniqueness and uniquely identify each record in a table. Is it clear? Yeah. If you are doubt in these points, please ask your doubt. Sir, Yes, ask your doubt. sir, what is attribute, sir? What is attribute? Here attributes means column or field. Look here, this STUDID, student ID, roll number. So student ID is a attribute, means this is a field, this is a column, or another words you can say it is an attribute. So attribute is a column. Now clear, Ravinder? Roll number is another attribute, first name is another attribute, last name is Okay, another sir. one, ठीक है। तो attributes means a column. So candidate key may have multiple attributes. So either single column make as a candidate key or collection of columns means collection of attributes make as a candidate key, ठीक है। Any other doubt? Next, foreign key. Foreign key is a column that creates a relationship between two tables. Means foreign key is basically used to join or relate two different tables. The purpose of foreign key is to maintain data integrity and allows navigation between two different instances of an entity. It acts as a cross reference between two tables as it references the primary key of another table. Means once you set the primary key in one table, that same column which you applied primary key, it acts as a foreign key in another table. Look this, here we have two different tables. In these tables, look, DEPT, department column, and department code and department code is given here, okay। So here this department code in first table has unique value like 001, 002 and 005. It acts as a foreign key is another table. In the foreign key you can write duplicate value, but in the primary key column you cannot write duplicate values. Look here, 001, 002 and 005 is given here, but here in the department code 002, 002 and 001, you can create foreign key only when you have set primary key इन अनदर टेबल। जब प्राइमरी की बना लोगे दूसरी टेबल में तो उस कॉलम को ही आप
फॉरेन की तरह दूसरी टेबल में यूज कर पाओगे, अदरवाइज यूज नहीं हो पाएगा। ठीक है, नाउ इट इज क्लियर।